वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। मैं आज क्लास 7 से एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं, तो कृपया मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। द क्वेश्चन इज दैट ए सम लेंड आउट एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स रुपीज 4480 इन 3 years एंड रुपीज 4800 इन 5 years। फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता है? एक धनराशि है जो 3 साल के लिए ब्याज में देते हैं, इंटरेस्ट में देते हैं। वो बनते हैं अमाउंट, कितना बनते हैं? 4480 रुपीज। वही अमाउंट अगर 5 साल के लिए देते हैं तो वो बनते हैं 4800 रुपीज। तो हमें उस धनराशि फाइंड आउट करना है, निकालना है, वो सम निकालना है, और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज का हार कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सोल्यूशन। We have here amount in 5 years rupees 4800, amount in 3 years rupees 4480। मतलब ये 5 साल में 4800 और 3 years में होते हैं 4480। If we subtract this from the amount of 5 years, amount of 3 years, then we will have here, हमें मिलेंगे 0, 2, 3। ये बनते हैं 5 years से 3 years घटाने से 2 years। ये 2 years का इंटरेस्ट बनता है। ठीक है, इंटरेस्ट इन 2 years, इंटरेस्ट इन 1 year। हमें 1 year का इंटरेस्ट अभी फाइंड आउट करना है, तो 320 डिवाइड 2, ये होता है इंटरेस्ट ऑफ 1 year। इंटरेस्ट इन 3 years, 3 साल का इंटरेस्ट निकालना है, 320 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 3। अगर 5 years का इंटरेस्ट निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना है। हमें 3 years का निकालना है। इंटरेस्ट ऑफ 3 years इज मल्टीप्लाई 3। 2 goes into 1 time, 2 goes in 32, 16 times there is another 0, 160, 16 3 is 48, this is the 0 here, it will 480। this is the interest of 3 years। okay, प्रिंसिपल कितना है वो निकालना है। therefore प्रिंसिपल equals to amount in 3 years minus interest, interest of 3 years। okay, it will 4480 minus 480, ultimately it will 4000, it will rupees, the principal is rupees 4000। we have now principal P equals to 4000 time equals to 3 years, interest I equals to 480, rate of interest equals to what? Now we have to find out the rate of interest. We know that PRT by 100 equals to I, interest.
we have to take here only r equals to I multiply this 100 divide p into t. The value of I is 480 multiply 100 by the value of p is 4000, t is 3 years. This 2 zeros and this 2 zeros has been cancelled. This 0 and this 0 has been cancelled. 3 goes in 3 one time. 3 goes in 16 times. 16 by 4 equals to 4 for the 16. Therefore, principal P equals to rupees 4000 and rate of interest R is 4%. This is the answer. Okay.